అందరికీ రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు కువైట్లోని ఇండియన్ ఎంబసీలో జరిగిన రిపబ్లిక్ డే వేడుకలలో కువైట్లోని భారతీయులు భారీగా పాల్గొన్నారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో భారత రాయబారి డాక్టర్ ఆదర్శ్ స్వైకా గారు పాల్గొని జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి రాష్ట్రపతి సందేశాన్ని చదివి వినిపించారు. అనంతరం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమాలు అందరినీ అలరించాయి. యూట్యూబ్లో ప్రాబ్లం వలన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను చూపించలేకపోతున్నాను, అందుకు నన్ను క్షమించండి. రాష్ట్రపతి సందేశాన్ని ఇప్పుడు వినండి. అలాగే రేపటి వీడియోలో రాష్ట్రపతి సందేశం తెలుగులో వినండి. కువైట్లో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా మీ ముందు ఉంచుతుంది సంజు న్యూస్. కావున ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియో చూసేవారు మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నాకు సపోర్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం రాష్ట్రపతి సందేశాన్ని వింటాము. भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन पढ़ूंगा. I will read some part in English and some part in Hindi. प्यारे देशवासियों, नमस्कार. 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत लोगों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ. हम अब गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं. संविधान के लागू होने के दिन से लेकर आज तक हमारी यात्रा अद्भुत रही है और इससे कई अन्य देश को प्रेरणा मिली है. प्रत्येक नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है. जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब एक राष्ट्र के रूप में हमें मिलजुल कर जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उनका हम उत्सव मनाते हैं. Dear fellow citizens, नमस्कार. On the eve of the 74th Republic Day, I extend my heartiest greeting to every Indian at home and abroad. We will now enter the 75th year as a republic. From the day the Constitution came into effect to the present day, it has been an amazing journey that has inspired many other nations. Every citizen has reason to be proud of the Indian story. When we celebrate the Republic Day, we celebrate what we have achieved together as a nation. भारत विश्व की सबसे पुरानी जीवन सभ्यताओं में से एक है. भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है. फिर भी हमारा आधुनिक गणतंत्र युवा है. स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमें अनगिनत चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. लंबे विदेशी शासन के अनेक बुरे परिणामों में से दो प्रभाव थे: भयंकर गरीबी और निरक्षरता. फिर भी भारत अविचलित रहा. आशा और विश्वास के साथ हमने मानव जाति के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग शुरू किया. इतनी बड़ी संख्या में इतनी विविधताओं से भरा जन समुदाय एक लोकतंत्र के रूप में एकजुट नहीं हुआ था. ऐसा हमने इस विश्वास के साथ किया कि हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं. इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं की, हमें जोड़ा है. इसलिए लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में सफल हुए. यही भारत का सार तत्व है. यह सार तत्व संविधान के केंद्र में रहा है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है. स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के अनुरूप हमारे गणतंत्र को वाला संविधान बना. महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना भी था और भारतीय आदर्शों को फिर से स्थापित करना भी था. उन दशकों के संघर्ष और बलिदान ने हमें न केवल विदेशी शासन से बल्कि थोपे गए मूल्यों और संकीर्ण विश्व दृष्टिकोण से भी आज़ादी दिलाने में मदद की. शांति, बंधुता और समानता के हमारे सदियों पुराने मूल्यों को फिर से अपनाने में क्रांतिकारियों और सुधारकों ने दूरदर्शी और आदर्शवादी विभूतियों के साथ मिलकर काम किया. जिन लोगों ने आधुनिक भारतीय चिंतन धारा को प्रभा दिया, उन्होंने आ नो भद्रा तत्वो यंतु विश्वतः अर्थात हमारे पास सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए कि वैदिक उपदेश के अनुसार प्रगतिशील विचारों का भी स्वागत किया. लंबे और गहन विचार मंथन के परिणाम स्वरूप हमारे संविधान की संरचना हुई. Our founding document is inspired by the humanistic philosophy of the oldest living civilization in the world, as well as new ideas that emerged in more recent history. The nation will remain grateful to Dr. B.R. Ambedkar, who headed the drafting committee of the Constitution and thus had a critical part in giving it the final shape. On this day, we should also remember
the role of jurist B.N. Rao, who had prepared the initial draft, and other experts and officers who helped in the making of the Constitution. We are proud of the fact that the members of that assembly represented all regions and communities of India, and that they included 15 women too. Their vision, as enshrined in the Constitution, has been continuously guiding our republic. During this period, India has been transformed from a largely poor and illiterate nation into a confident nation marching on the world stage. This would not have been possible but for the collective vision of the Constitution makers guiding our path. Like Baba Sahib Ambedkar and others gave us a map and a moral framework, the task of walking that path remains our responsibility. We have largely remained true to their expectations, and yet we realize that much remains to be done to realize Gandhi's ideal of Sarvodaya, the upliftment of all. Yet the progress we have made on all fronts is encouraging. प्यारे देशवासियों, सर्वोदय के हमारे मिशन में आर्थिक मंच पर हुई प्रगति सबसे अधिक उत्साहजनक रही है। पिछले साल भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। यह उल्लेख करना जरूरी है कि यह उपलब्धि आर्थिक अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में प्राप्त की गई है। वैश्विक महामारी चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। शुरुआती दौर में कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी क्षति पहुंची। फिर भी सक्षम नेतृत्व और प्रभावी संघर्षशीलता के बल पर हम शीघ्र ही मंदी से बाहर आ गए और अपनी विकास यात्रा को फिर से शुरू किया। अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र अब महामारी के प्रभाव से बाहर आ गए हैं। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह सरकार द्वारा समय पर किए गए सक्रिय प्रयासों द्वारा ही संभव हो पाया है। इस संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति जन सामान्य के बीच विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गई है। यह बड़े ही संतोष का विषय है कि जो लोग हाशिए पर रह गए थे उनका भी योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेश किया गया है तथा कठिनाई में उनकी मदद की गई है। मार्च 2020 में घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर अमल करते हुए सरकार ने उस समय गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जब हमारे देशवासी कोविड-19 की महामारी के कारण अकस्मात उत्पन्न हुए आर्थिक व्यवधान का सामना कर रहे थे। इस सहायता की वजह से किसी को भी खाली पेट नहीं सोना पड़ा। गरीब परिवारों के हित को सर्वोपरि रखते हुए इस योजना की अवधि को बार बार बढ़ाया गया तथा लगभग 81 करोड़ देशवासी लाभान्वित होते रहे। इस सहायता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2023 के दौरान भी लाभार्थियों को उनका मासिक राशन मुफ्त में मिलेगा। इस ऐतिहासिक कदम से सरकार ने कमजोर वर्गों को आर्थिक विकास में शामिल करने के साथ साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सुदृढ़ करने के लिए हम उपयोगी प्रयासों का सिलसिला शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे। हमारा अंतिम लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे सभी नागरिक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी वास्तविक क्षमताओं का पूरा उपयोग करें और उनका जीवन फले फूले। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा ही आधारशिला तैयार करती है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वाकांक्षी परिवर्तन किए गए हैं। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य कहे जा सकते हैं। पहला आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण और दूसरा सत्य की खोज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह नीति शिक्षार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए हमारी सभ्यता पर आधारित ज्ञान को समकालीन जीवन के लिए प्रासंगिक बनाती है। इस स्थिति में शिक्षा प्रक्रिया को विस्तार और गहराई प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। As we come to realize, in the early days of COVID-19, technology offers life-changing possibilities. The Digital India Mission is striving to make information and communication technology inclusive by bridging the rural-urban divide. More and more people in far-flung places have been reaping the benefits of the internet and are receiving a variety of services provided by the government as the infrastructure expands. We have reasons to be proud of our achievements in the domain of science and technology. India has been among the handful of pioneers
in space technology. As long-pending reforms in this sector are underway, private enterprises are now invited to join the quest. The Gaganyaan program to carry Indian astronauts into the space is under progress. This will be India's maiden human spaceflight. Yet, even as we reach out to the stars, we keep our feet on the ground. India's Mars mission was powered by a team of extraordinary women, and our sisters and daughters are not far behind in other areas too. Women's empowerment and gender equality are no longer mere slogans, as we have made great progress towards these ideals in recent years. With people's participation in Beti Bachao, Beti Padhao campaign, women's representation has been rising in every sphere of activity. During my visits to various states, educational institutions, and while meeting delegations of various professionals, I am amazed by the confidence of young women. I have no doubt in my mind that they are the ones who will do most to shape tomorrow's India. What miracles cannot be achieved if this half of the population is encouraged to contribute to nation building to the best of their ability. The same vision of empowerment guides the government's approach to the marginalized communities, including the scheduled castes and scheduled tribes. In fact, the aim is not only to remove hurdles and help them in development, but also to learn from them. Tribal communities, in particular, have rich lessons to offer in many areas, ranging from protecting the environment to making the society more cohesive. Dear fellow citizens, as a result of a series of initiatives in recent years to transform all aspects of governance and unleash creative energies of people, the world has started to look at India with a new sense of respect. Our interventions in various world forums have started making a positive difference. The respect that India has earned on the world stage has resulted in new opportunities as well as responsibilities. This year, as you know, India holds the presidency of Group of 20 nations. With our motto of universal brotherhood, we stand for peace and prosperity of all. Thus, the G20 presidency is an opportunity to promote democracy and multilateralism and the right forum for shaping a better world and a better future. Under India's leadership, I am sure G20 will be able to further enhance its efforts to build a more equitable and sustainable world order. As G20 represents about 2/3 of the world population and around 85% of the global GDP, it is an ideal forum to discuss and find solutions for global challenges. To my mind, global warming and climate change are the most pressing among them. Global temperatures are rising and incidents of extreme weather are increasing. We are faced with a dilemma. To lift more and more people out of poverty, we need economic growth. But that growth also comes from fossil fuels. Unfortunately, the poor bear the brunt of global warming more than others. Developing and popularizing alternative sources of energy is one of the solutions. India has taken a commendable lead in this direction by giving a policy push to solar energy and electric vehicles. At the global level, however, emerging economies need a helping hand from advanced nations in the form of technology transfer and financial support. To maintain the balance between development and environment, we have to look at the ancient tradition with a new perspective. We need to reconsider our basic priorities. The scientific aspects of traditional life values have to be understood. We must, once again, rekindle that respect for nature and humility before the vast universe. Let me state here that Mahatma Gandhi was a true prophet of our times, as he foresaw the calamities of indiscriminate industrialization and cautioned the world to mend its ways. We need to modify our lifestyle if we want our children to live happily on this fragile planet. One of the changes suggested pertains to food. I am happy to note that the United Nations accepted a suggestion from India and declared 2023 as the International Year of Millets. Millets were essential ingredients of our diet and they are making a comeback among sections of society. Coarse grains like millets are eco-friendly as they require less water to grow and yet they provide high levels of nutrition. If more and more people turn to millets, it will help conserve ecology and also improve health. गणतंत्र का एक और वर्ष बीत चुका है और एक नया वर्ष शुरू हो रहा है। यह अभूतपूर्व परिवर्तन का दौर रहा है। महामारी के प्रकोप से दुनिया कुछ ही दिनों में बदल गई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान जब भी हमें लगा कि हमने वायरस पर काबू पा लिया है, तो वायरस फिर किसी विकृत रूप में वापस आ जाता है।
लेकिन अब उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि हमारा नेतृत्व, हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर, हमारा प्रशासक और कोरोना योद्धा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही हमने यह भी सीखा है कि हम अपनी सुरक्षा में कभी कमी नहीं आने देंगे और सतर्क भी रहेंगे। प्यारे देशवासियों, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पीढ़ियों के लोग हमारे गणतंत्र की अब तक की विकास गाथा में अमूल्य योगदान के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। मैं किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भूमिकाओं की सराहना करती हूँ, जिनकी सामूहिक शक्ति हमारे देश को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की भावना के अनुरूप आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। मैं देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना करती हूँ। भारत की संस्कृति और सभ्यता के अभिनव प्रवासी भारतीयों का भी मैं अभिवादन करती हूँ। इस अवसर पर मैं उन बहादुर जवानों की विशेष रूप से सराहना करती हूँ जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और किसी भी त्याग तथा बलिदान के लिए सदैव तैयार रहते हैं। देशवासियों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले समस्त अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बलों के बहादुर जवानों का भी मैं सराहना करता हूँ। हमारी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बलों के जिन वीरों ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सबको मैं सादर नमन करती हूँ। मैं सभी प्यारे बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। आप सभी देशवासियों के लिए एक बार फिर मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। On the occasion of Republic Day, I convey my special appreciation to our jawans who guard our borders and are ready to make any sacrifice for the country. I also express my appreciation for all the brave soldiers of paramilitary forces and police forces who provide internal security to their fellow citizens. I salute all the brave hearts of our armed forces, paramilitary forces and police forces who laid down their lives in the line of duty. I convey my blessings to all the dear children for their bright future. Once again, I extend my best wishes to all of you on this Republic Day. Dhanyavad, Jai Hind, Jai Bharat. Dear members of the Indian community, this was Honorable Rashtrapati Ji's message to the nation on the eve of 74th Republic Day, which she addressed yesterday. I also wanted to take this opportunity of your large presence to briefly mention a few points. The first and foremost thing I want to convey is that Embassy is always ready to render every possible assistance to those of you in any difficulty. We have 24/7 WhatsApp lines for dedicated issues to which you can always reach us anytime. Also, we have the mechanism of weekly open house where I am personally present and we can bring your unresolved complaints and grievances to our attention for possible resolution. मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप बिना किसी भी संकोच के दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस समस्या का हल निकाला जा सके। I would also be amiss if I don't give you a sense of a bilateral relationship with Kuwait. The relationship continues to be very good because the leadership of both the countries attach high importance to this relationship. We have, as you know, age-old ties with Kuwait, which is reflected in our strong people-to-people contact, and there's a lot of potential for greater economic cooperation on which we are working. On the community front, you are aware that the largest expatriate community in Kuwait is of Indians, and very rightly so, because of your hard work and contribution to this country, which is well acknowledged. A large number of our community associations are doing a lot of charitable work as well as organizing various cultural events and doing charitable activities, which is very, very important in its own way. I personally, on behalf of the embassy, compliment and commend your work, and we will be associated to the extent possible. I have already met most of the community organizations here, and we look forward to working with them. I will not take much time because I've been speaking for quite some time, but before I leave, I just wanted to make a request to all of you that we should tell our friends, relatives, acquaintances who want to come to Kuwait to work that
please come through legal channels and not fall in the clutches of touts and agents. With this, I want to end here. I want to once again wish you all a very very happy Republic Day. आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. Thank you.